Up next is the panel discussion on building a trusted online brand. We have Ms. Shradha Sharma, founder and chief editor of Your Story, which is one of the most trusted websites on startups and entrepreneurs. She is one of the most well-known faces in the startup media entertainment and an important commentator on the Indian tech universe. Next, we have Mr. Alakh Pandey, co-founder of the unicorn Edtech startup PhysicsWallah. He is very passionate about education and has built an iconic brand trusted by millions of students across India in just a few years. This session will be moderated by Ms. Avani Davda. She is a strategic advisor at Bain Advisory Network and board member of NIIT Limited and Persistent Systems. She was the founding CEO at Starbucks and the youngest CEO in the Tata Group, where she led aggressive expansion of over 85 Starbucks stores in India in 3 years. May I request the audience to type in their questions by clicking on the Q&A icon. They will be answered at the end of this session. Over to you, Ms. Davda, for further deliberations. Thank you so much. It's an honor to be in such a group. Both the co-panelists that we have today. I hope you can hear me clearly. Yeah, thank you. So I was just saying it's a pleasure and an honor. And when Raji, our chairman, said, this is an opportunity to speak to two very amazing founders who've literally written their own stories, and both are very well known. In fact, I told Alakh as I met him that he's got a fan in my own family. My husband's also a techie and in the entrepreneurial world and really follows him. His movie has been made, of course, a documentary. And Shradha, of course, tells, has the power to tell a story in a very compelling way. And I had the opportunity to meet her a few years ago on an IBM panel. So really a privilege and an honor. And we'll try and make this a session. As you both know, both of you have been entrepreneurs. I have not been one. I've been an entrepreneur in a corporate setup, but you know the audience very well. And the context is to really learn from you and learn something very practical. Like Alakh and I were saying, I would encourage both of you to speak from the heart, and also let's make it meaningful. I'm sure the audience will have lots of questions. So let's start off with something that I believe is a very rare commodity in entrepreneurship today, but both of you have built such an amazing brand. So I'm going to ask two questions and maybe we'll have Shradha and then Alakh go at it. Building a trusted brand in the online space is like looking for the holy grail, right? किसी को नहीं समझ में आता है कि trust कैसे बनाए. अगर आपका नाम टाटा है, गोदरेज है या NIT है, तो of course आपको लोगों का प्यार और trust बहुत जल्दी मिल जाता है. But as a new company, and given the audience, we are building edtech or technology brands in the online space. What are your two things or one thing that you would like people to understand when they are building trusted brands? So over to you, Shradha. Abhi, very honored to be here. Thank you so much. And I don't know if Pawar is there. It's a great honor to be part of this conversation. And I'm looking forward to listening to Alakh because it's always interesting and a lot of learning listening to him. So, just to answer your question, how do you build a trusted brand? And I do think about it because they're like, which are the brands that we love? And one of the questions, the answer that comes to my mind is that अच्छे brand overnight नहीं बनते हैं. So one of the things is that, of course, it's a strength and it's also a weakness that you can't overnight build a brand. Right? And I have not seen, like today, if you look at in the startup world, also brands that, one talks about, the Swiggy, Zomato, all these companies, technically these companies have been there for last 10 years. And of course, from a Tata standpoint, which has been a 100-plus-year brand, these are 10-year-old brands, but consistent behavior, which is where you walk the talk, is one of the key recipes where people see you for who you are and see you consistently behaving in a certain way, goes on to build a brand. And then to me, that has been, you look at any of the brands, I think that stands for it. And I would say for Your Story, we've been there for like 14 years and told 1.5 lakh stories. Just standing with the entrepreneurs when it's easy to critique them, write negative about them and pull them down. Over the years, we've been called, mouthpiece, cheerleader,
PR for startups and entrepreneurs, but this is what you stand for. And when you are standing for what you believe in, you will, sometimes it's going to be tough, but being consistent, Saturday, Sunday, day and night, writing stories for 14 years, I think somewhere has made us a brand. And I think it has come with time. So yeah, to sum this up, I'd say consistent takes time. You can't be a brand overnight. Like a brand which people believe in, trust, relate to, comes with time. And same behavior, and for that you might be challenged, you might be questioned, you might be put under the fire, but not changing your behavior when you are tested and being the same. Ye sab karke brand ban jate hain. And then it's easy, think about any brand that you like, and I think more or less you'll get these as the answer. So yeah, thanks. Alakh, PhysicsWallah, and what is the trust? I think you have a tremendous amount of fan following, but also a lot of trust that students place with you, right? And your brand. So tell us a little bit how you thought of it. Yeah, first of all, thank you so much. And I'm really honored to be the part of this panel. Particularly respected Rajan sir is here. And I've been an ex-NIIT student. Of course, the free session for 7 days. I told Rajan sir on call even. And of course, Shradha is here. Thank you so much for the precious gift, Shradha. I received it and you didn't come. So let's leave that. So coming to the brand thing. Yeah. What we say in PW, what I say in PW PhysicsWallah, that we say that it's not brand, it's emotion. We say it's not brand, it's all about the emotions that play along. If you see in your house, even it's in your home, even you yourself is a brand. For example, Avani, you are a brand in your home that, for example, you go to your job at this particular time, you return from job at this particular time. Yeah, of course, 30 minutes here and there works. But as Shradha says, being consistent on that pattern is what makes you a brand. That you leave home by 10, you'll reach home by 5, then you will do whatever, cook food or whatever you do for your family, for your children, whatever, for your brother, sister, anyone. Then you watch TV, then you give particular kind of sessions, you do yoga. Then this is your habit. This is the chain of habits that you follow, and everyone is having a habit to see that. So you cannot change it overnight. You cannot change the perception overnight. You have to follow it. You have to be consistent about what it is. It's all about the emotion. One day you cannot say that I'll be Julius Caesar, and the next day you are saying, no, I'm not Julius Caesar, I'm like Premchand. You cannot change it overnight. Your perceptions, your views, you have to stick on it. And in the recent time, I have also seen brand building on the basis of some controversies, on the basis of some viralities. And what do you see? Those brands last, of course, they come overnight and they also last overnight. So brand is something that needs a lot of sweat, a lot of brainstorming, and a lot of consistency along with, and of course, maintaining the same emotions. Moreover, having the transparency with the audience. For example, you have a transparency at your home. If you don't feel like talking with your brother, sister, your mother, parent, you say it in their face. I don't want to talk right now. Let's talk tomorrow. Let's talk some other day. If you don't like a food, you don't overpraise your mother कि बहुत अच्छा बना. अपन मम्मी से अपन खुला बोल देते हैं कि आज नहीं यार नमक नहीं डाला है, कल बहुत सही खाना बनाया था. So you have to be that much transparent and that much raw with the audience. अभी ना वो जमाना चला गया पुराना वाला कि आप ब्रांड को उस तरह से बताओ कि सिर्फ 4 रुपए में ऐसा हो जाएगा. Like you cannot give quotes and all those फ्लैशी लाइंस एंड ब्रांड उससे बन जाएगा कि आप ऐसा कुछ बोल दो. फॉर एग्जांपल अभी भी आप देखते हो टीवी पे वो एड्स आते हैं कि सिर्फ 72 दिन के अंदर आपके सारे सर दर्द को हर लेगा, आपके सारे बदन दर्द को हर लेगा, वजन घटाएं 10 दिन में. सो ऑल दोस इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू बी रॉ, you have to be consistent, and you have to play along the emotions. Whatever the emotions are there, you have to respect them. And at a lot of time you have to compromise your financials, your business model as well in the name of brand. I am Pratik is my co-founder. Whenever we talk, whenever we have a particular decision to make, so on that particular decision, we sometimes it's like it's a financial decision, it's a business decision, it's a growth decision versus the brand decision. So always the brand decision dominates. What's the brand stand for? The brand stands for students. So the decision should be in the favor of the students only. So that's how the brand is built. A lot of sacrifices has to be made while building a brand. A lot of things you have to sacrifice. You have to sacrifice your family life. You have to sacrifice your personal life. You have to sacrifice sometimes the financial growth of the company. You have to sacrifice a lot of employees' emotions around you, a lot of growth of employees around you.
A lot of things you have to sacrifice. So it's like brand first. You have to set 7 ideologies, whatever the brand says, whatever the organization says, that there are 3 golden rules, 7 ideologies that should never be broken, come what may come. So you have to follow them like the freedom fighters followed. So you have to have that emotions for your brand. Thank you. I think Alakh and Shradha, so consistency, and I can literally, think about the brand that I handle, Starbucks, rituals, like Alakh talked about, that you need to have rituals in your brand, and that builds consistency. Whether it's ritual of how you taste coffee or how you get to work or how you tell a story or how you deliver physics on an online session, right? So consistency, very important to stay authentic and true to it, to be able to build it long term. And one of the questions our audience also asked is, and I think Alakh, you did speak a little bit about it. How do you manage stakeholders? Because there are going to be pressures on an entrepreneur, pressures that you put, pressure consumers put, pressure investors put, pressure your team builds. So one of the questions is you have to remain true and authentic. And maybe Alakh, one question I wanted to ask you is that a lot of entrepreneurs want to build a community and then monetize it to start off their brand. Your journey was similar. आपने पहले फिजिक्स के वीडियोस फ्री में दिए और यूट्यूब में, और फिर जाके उसको मोनेटाइज किया, राइट? सो हाउ डू यू वर देयर एनी नेगेटिव कंसिडरेशंस व्हेन यू स्विच द मॉडल? हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? पोस्टमार्टम करना आसान है कि पहले कम्युनिटी बनाई और फिर मोनेटाइज किया, बट व्हाट वाज योर जर्नी? हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? क्या ट्रेड ऑफ्स थे? अगर आप उसके बारे में बताएंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. See, all this sounds good in an interview, that first you build a community, then you monetize it, then you have like upselling products and all those. But while you are living the journey, you will be on the right track only until you have passion and love for that particular craft that you are following. So if you love your craft, the way will be simple, the way will be a happy way, the way will be a prosperous way. So I enjoyed teaching physics. So that's what I was doing. And I also enjoyed like a sense of making thing engaging, you can say part of dramatics. So I was also enjoying that passion there also. On the point, building a community and then monetizing it, it happens on itself. I didn't do it, so I'll be very frank about it. Maybe some of the young entrepreneurs can learn from this and do it intentionally. But when you then do it intentionally, I think there will be a malice intent while building a community only. So you're not building a community, you're building a customer base. So that is there's a difference between them. So you're like having something in your mind already that I'll use this community for the business model. So that's not going to work. Community is built with love, community is built with trust, community is built with rawness. It's not built with malice intentions of building a unicorn company on it. I'll be very honest. So it all happens by chance for PhysicsWallah. Yeah, of course, on that point, जो आपने बोला कि कैसे सडनली जब आप चीजों को मोनेटाइज करते हो तो कम्युनिटी का बिहेवियर, सो इट्स वेरी एग्रेसिव. दे आर लाइक कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने इसीलिए ये सब किया था, एक दिन तुमको यही करना था, यही तुम्हारा एम था. सो इट्स लाइक यू लव अ गर्ल एंड शी इज वेरी डियर टू यू, शी इज वेरी लवली, शी इज वेरी केयरिंग एंड यू लव हर like hell. You marry her, then you come to know that her father is a rich businessman. Then she is like, तुमने मेरे पापा के लिए शादी की थी, सारा खेल इसलिए चल रहा था पहले से. You are like, no, I love you. That was I was doing. So that kind of फीडबैक केम फ्रॉम स्टूडेंट सेक्शन एज वेल कि आप मोनेटाइज करना चाह रहे हो, आप पैसे बनाना चाह रहे हो, आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, आप रिच बनना चाह रहे हो. But at the point when you stick to your vision and you go and talk about it, it's not like that we will not talk. A lot of entrepreneurs, a lot of brand do this mistake of remaining silent, and we have discussed this a lot in our offices that कई बार होता है ना, ऐसे कोई चीज हो जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो सही रहेगा, बोलने से बात और बढ़ जाएगा. सो होता क्या है, ना बोलने से भी बात उतना ही बढ़ता है और सारा नेगेटिव परसेप्शन में बढ़ता है. आप जाके बात ही नहीं कर रहे हो जिन लोगों के साथ आपने कहानी स्टार्ट की थी, है ना. आप घर पे देखो ना, जैसे कोई चीज होती है तो हम लोग क्या ये बोलते हैं, नहीं इस बारे में पापा से डिस्कशन नहीं करते हैं यार, पापा बोल रहे हैं अपन दरवाजा बंद कर लेंगे, कभी कुछ होगा ही नहीं. नहीं यार, वो चीज हो रही है, इट्स फॉर रियल हैपनिंग आउट देयर. सो गो एंड टॉक. You have to go and fix it. You have to go and talk about it. At least you cannot fix it, just talk. कई बार ना चीजें फिक्स नहीं होती, कई बार जाके सिर्फ बात कर लेनी होती है.
सो आपके पास कम्युनिटी इतनी अच्छी है, तो हम लोग ने मैंने कई बार जाके बात की, मैंने समझाया देखो भाई, एक अकेला आदमी इतना सब कुछ नहीं कर सकता है। जब तक दाल रोटी नहीं चलेगी, जब तक पैसा नहीं आएगा, और लोगों की जब तक सैलरी नहीं आएगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड होगा। अकेला इंसान से फिजिक्स पढ़ाएगा, कहाँ से आपको असाइनमेंट बना के देगा, कहाँ से आपको टेस्ट पेपर बना के देगा, कहाँ से आपके टेस्ट पेपर चेक होंगे, कहाँ से आपके डाउट सॉल्व होंगे, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ये करवानी है तो बताओ, नहीं करवानी नहीं बताओ, तो सब एग्री करते हैं। देन ऑफ कोर्स देयर विल बी सम fraction of negativity that will always be there from the community, but you have to take continuous feedback from the community and improve it and keep working on it. And वही है कि आप अपने मेन विजन को हमेशा पॉइंट बना के रखो, उससे आप इधर उधर ना हो, तो चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं। कम्युनिटी को मोनेटाइज करने में आता है थोड़ा सा रैत उस तरफ से, बट यू हैव टू जस्टिफाई इट विथ योर प्रोडक्ट दैट सी दिस इज वर्दी, दिस प्रोडक्ट इज वर्दी। आज बच्चे अगर मिलते हैं, आज बच्चे यूट्यूब पे बात करते हैं, कहीं मुझसे मिलते हैं, तो मुझसे बोलते हैं 3 साल में आपने आपने चीजों को बदला। पहले आप एक यूट्यूब चैनल थे, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप कुछ कर रहे हो, अब बाकी एडटेक का प्राइस डाउन हो रहा है। तो ये सब तभी हो सकता था जब आप ये करते। हाँ, उस टाइम हम लोगों ने गलत समझा था। सो इट टेक्स टाइम, यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर विजन एंड प्रूव देम इन द एंड। दैट्स व्हाट आई फील। Fantastic, Alakh. I think very good insight there that the journey is not easy. I think authenticity, आपकी जो आपकी मेन स्ट्रैटेजी या विजन है उसको ट्रू रहना, आपकी कम्युनिटी से बुरे टाइम में या जब ब्रिक बैक मिलते हैं तभी बात करना बहुत जरूरी होता है। एंड श्रद्धा, आई थिंक आप दोनों ऐसे एंटरप्रेन्योर हो जिन्होंने एक ही चीज को लेके उसमें बहुत डीप डाइव किया और अपना ब्रांड बिल्ड किया, राइट? सो श्रद्धा, you spoke a little bit about it, that you wanted to do journalism and you wanted to carve a niche for entrepreneur who was growing, that entire field was growing in India, and you said, I will bring out positive story. So my question to you is twofold. One is it challenging to remain true to only one area? And now that you are thinking of expanding your journey and even, you know, starting a Your Story University, how did you make that decision? So how did you grow from one niche, build it, and then think about scaling up? So 2 questions in one, but would love to hear your perspective on this. Thanks, Avani. Before that, I just want to answer Alakh. Alakh, मैं दिल्ली फ्लाई करके आई थी तुम्हारे शादी के लिए, बट पता नहीं H1 वो जो भी कोई वायरस चल रहा है वो मुझे हो गया, मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं है। आई हैव ऑलवेज स्टेड प्राइड की मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत तबीयत खराब से गुजरी, और तुम्हारी शादी के लिए ड्रेस भी था, एंड आई स्वेयर, झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, लिया कि because I wanted to specially come for your marriage because I relate to you and I have good and strong admiration for you. So sorry, but I want to Thank you. your wife. I'm saying through this platform. Avni, to answer the question, yes, consistent रहना 14 साल तक, 15 साल शुरू हो रहा है मेरे लिए, is not easy. Sometimes you doubt your own journey, especially when you see everyone around you becoming unicorn. There are so many questions that come. Did I do the right thing? And I was thinking that my biggest theme in life is, you know, the toughest challenge in life is to be positive. मतलब इतना हम बचपन से हमें सिखाया जाता है बी पॉजिटिव, बहुत दुनिया इज नेगेटिव, and that is a fact that things around you will be negative. तब आप कैसे consistent रहे? I'll give you one very small example that 20 years back there was an entrepreneur. अभी वो बहुत बड़े entrepreneur थे. He's still a very big entrepreneur and he was very much in the headlines every day. Suddenly his company and his valuation was coming down and there was a lot of negativity around him. So someone in my team said, hum likhenge Humpty Dumpty and blah 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 or something, or Jack and Jill had a fall, came tumbling down, or uska naam tha came tumbling down. I said, why make fun? And the person said that, listen, this will go viral and we will get a lot of views, and this is something that we should write about. I said, no, if we are saying that we are standing with the entrepreneur when they are tumbling down, then that time we will also not tumble down and go down from what we believe in. And we didn't, right? And then uske chalte aaj today, people say that, oh, one has very fantastic relationships with everyone and all the founders trust. Yesterday, I spent 5 hours with Dipinder Goyal, and I'm looking forward to the story, the conversation, because he's talked about his stammering, things he's never spoken in his life, right? And that trust tabhi hota hai when people know that consistently you've stood with them. It comes at a cost. You have to pay the price.
and you have to be ready to pay the price. Like, I want to say NIIT, today we are in this conversation, and I really admire Mr. Pawar, because to build NIIT kind of a brand, I wonder what goes in his mind when he saw the EdTech thing happening and everyone becoming unicorn overnight. Because the way he's also built NIIT is based on first principle of sahi dhang se, sahi tarike se brand banana. So yes, and to all the young people and everyone who's building a business, it's going to be hard. It's not going to be easy. And if anyone says anything, otherwise they're bullshitting. Because to stand to any principle, जैसे अलग कह रहा था ना कि घर में भी अगर किसी भी point of view में खड़ा रहना और consistently आसान नहीं है. So that is what I would say. And as I'm expanding today, university's basis that we've done 1.5 lakh stories. 1.5 lakh stories देश में entrepreneurs को और कौन किया होगा? हम किए हैं. बैठ के गोईठे की तरह, एक तपस्या की तरह बनाया है. तो उस 1.5 लाख स्टोरी में वी सेड कि क्या क्या है कि एंटरप्रेन्योर सक्सीड कैसे करते हैं और फेल कैसे करते हैं. और उस बेसिस पे वी सेड लेट्स कम अप विद अ लर्निंग. And I'm very privileged and honored, आज share करना चाहूंगी, that I'm in Delhi right now and we got a pilot project in Bihar to train 4 lakh women कि उनको हम एंटरप्रेन्योर कैसे बनाए. अब हमें लग रहा है ये ट्रेनिंग तो हम बनाए थे न्यू एज लोगों के लिए बेस्ड ऑन 1.5 लाख का जो हमारा 14 साल का डेटा था. So that new young people will have those skill sets. Now we have to train this to 4 lakh women in Bihar to get them to be entrepreneurs. So Alakh, मैं तुमसे भी बात करूंगी, Mr. Pawar से भी बात करूंगी, but I will take this training that how do we get women to start up in Bihar. I come from Bihar और चीजें बहुत बदली हैं मगर बहुत नहीं भी बदली हैं ईस्टर्न यूपी और बिहार में. So this so one has to figure out, one has to learn. But to sum up, Avani, and I have to just tell you, Starbucks is a brand that we all love and I'm jealous of Starbucks because इतने consistent framework है कि इंडिया में भी आकर becoming such a ubiquitous brand where on the airports you see people are lining up. There is something to learn from there also. So yeah, to everyone I would say it's hard, it's tough to stay true to who you are. दूसरा but if you stay true, consistent, बहुत data मिल जाता है, बहुत context मिल जाता है और वही data, वही context helps you to expand and diversify. Thank you. I think that's very, very powerful. And I like the emotional connect that both the co-panelists have. I'm sure you'll make up about missing his wedding, but thanks for sharing that. In fact, one of the participants has posed this question. Maybe Alakh, you want to take a go at it. कभी-कभी होता है कि passion है, बहुत सारा co-founder या अकेले जो journey पे हम निकलते हैं, we sometimes obsess over our ideas and we fall in love with them, right? But sometimes they don't make sense. So how, in your experience, whether it's your journey or journeys that you've seen, and what would you tell these people? When is the right time to give up? Because अगर आप छोड़ोगे नहीं तो कुछ और नया भी नहीं बनोगे, right? It can't become a rabbit hole कि आप जाते ही जाओ और उसमें से कुछ निकले नहीं. So according to you, what are the 2 things that a person should watch out for when they know their idea is powerful, they believe in it, but there's just no success coming? When do you change? When do you, and I'm not just talking about a pivot. I think when do you become a little bit more objective and get out of it and say, I'm going to make a different choice? क्या देखना चाहिए 2 चीजें that tells you कि बहुत हो गया, now you need to think differently? मतलब आइडिया से ज्यादा तो ये छोड़ने ओढ़ने की बातों से मुझे यही आता है. ये बात आपने सही की, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा भाई. तो एकदम सही बात है. तो बीटेक ही छूटा था मेरा तो तीसरे साल में, तो ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाई. तो वो भी एक क्रूशियल डिसीजन है. ठीक है, स्टार्टअप नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था, पर एक ट्रैक था जिसमें मतलब भारत का सबसे ज्यादा नौजवान उसी पे चलता है भाई. बीटेक करने जाता है और एक गरीब वर्ग का बच्चा है, वो बीटेक करने गया है, बैंक से लोन लेके. तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट वही एक डिसीजन था कि छोड़ूंगी ना छोड़ू भाई. और तब तो मैंने वो छोड़ दिया था सिर्फ कि 5,000 की नौकरी मिल जाएगी यार, तो बैंक का लोन दे देंगे. तो क्या वो डिसीजन क्यों लिया था? तो उस टाइम पे तो मेरा यही था कि मेरे लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग जगह हो गई थी, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था उसके अंदर. और जब मैं बहुत हाइपर एक्टिव आदमी हूँ, मेरा ये है, मेरे को कुछ करना है और जो करना है वो बहुत ज्यादा करना है, ये मेरे दोस्त भी बोलते हैं. और ये मेरा एक फियर भी है कि इफ आई फॉल इनटू समथिंग डार्क, आई विल गो लाइक डार्क लाइक एनीथिंग. सो मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं जो करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, जान से करता हूँ, फिर करता जाता हूँ.
जब तक एकदम उसका एकदम पहाड़ नहीं बन जाता है। सो मेरे पास कुछ करने को क्रिएटिव था नहीं वहाँ बीटेक में, मेरे को मजा नहीं आ रहा था, तो फिर मैं गलत आदतों में पड़ गया, तो उसी में पड़ा जा रहा हूँ, चला जा रहा है, नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, एकदम बुरी जिंदगी है। तो मुझे लगा कि कोई भी चीज जब लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, पहला तो स्टेप ये है। बट टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड स्टार्टअप एंड आइडियाज प्रोडक्ट्स, वो थोड़ी अलग कहानी है। तो वहाँ क्या इंडिकेटर आपको दिखने लगता है? देखिए आजकल क्या है ना कि बहुत ज्यादा डेटाबेस सारी कहानी होती है, और आपके पास ये सारी एनालिटिक्स होती है, इतने बढ़िया टूल है, इतनी बढ़िया एमआईएस टीम आप बना सकते हो कि आपको अगले 3-4 साल का प्रोजेक्शन दिख जाता है। मोर और लेस 90% केसेस में वो सही भी होता है। अब हम लोग कई कुछ प्रोडक्ट हैं जो नहीं काम करते हैं, जैसे हम लोग ऐसा नहीं कि जो करते हैं सब चल जाता है, ऐसा नहीं है। सो कम्युनिटी इज नॉट लाइक कि तुम जो बना के दोगे वो चल जाएगा, इट्स नॉट गुलाम्स कि आप जो करोगे, इट्स अ कम्युनिटी, सबकी इक्वल राइट है। वो बोलते हैं ये बेवकूफ मत बनाओ, ये चीज नहीं चलेगी। तो एक प्रोडक्ट हम लोग ने बनाया लास्ट ईयर, बड़ा पावरफुल था, और जो आप बोल रहे हो इन्वेस्टर्स को हम लोग ने बताया ये प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर रॉक कर देगा, और ये प्रोडक्ट लाने वाला है इतना बड़ा रेवेन्यू, इतने बड़े इसमें इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे। एंड दैट प्रोडक्ट फेल लाइक एनीथिंग, मतलब एकदम खत्म। और ठीक है, भगवान की कृपा थी, वो नहीं चला, कुछ और चला। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन मल्टीपल आइडियाज। अगर आप स्टार्टअप के अंदर हो, प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर स्टार्टअप की नहीं, अब स्टार्टअप के अंदर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको मल्टीपल आइडियाज लगातार काम करने होते हैं। एंड नो मैटर कि कोई आइडिया कितना अच्छा लग रहा हो सुनने में, बनाने में, पेपर में उसका डायग्राम बनाने में, असाइन करने में कितना ही सुंदर लग रहा हो, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ इट्स नथिंग। मतलब आइडिया क्या होता है, 10% होता है, कुछ नहीं होता है। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, सिंपल सी बात है। तो मेरा एक बहुत, और वो जो आइडिया मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बता रहा हूँ, वो मेरा और प्रतीक भाई का बड़ा सोचा हुआ था, बड़ा अच्छा था कि वो तो चलेगा ही चलेगा, हिट हो जाएगा। इट डिडंट वर्क, इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। इवन पूरी वर्कफोर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया, उसको हम लोगों ने कम किया। हाँ, कहीं ना कहीं उसका कोई यूज हुआ, बट क्या मिलता है उससे? लर्निंग मिलती है बहुत बड़ी। हम लोग को उससे एक कोहर्ट बेस्ड लर्निंग होती है, वो हम लोग को समझ में आई कोहर्ट बेस्ड लर्निंग कैसे होती है। हमारा टेक बहुत इंप्रूव कर गया, वन ऑन वन लर्निंग हमें समझ में आई टेक में कैसे करते हैं। हमें ये समझ में आ गया ऑफलाइन के अंदर कैसे डिजिटल चीजों को डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन बोला जाता है, एडटेक है वैसे तो ऑफलाइन भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं ऑफलाइन, तो इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ रेवेन्यू स्टूडेंट बेस ऑल्सो। सो ऑफलाइन के अंदर कैसे टेक्नोलॉजी को डालना है, वो लर्निंग हम लोग को मिली उस प्रोडक्ट से, जो हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया। कैसे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है? इट्स द फीडबैक, इट्स नॉट द रेवेन्यू, it's not the number of students, number of customer enrolling in it, it's the feedback and the amount of usage also. कई बार क्या होता है कि चीज का फीडबैक बहुत अच्छा है बट यूज नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या है? कई बार होता है ना, जैसे कोई बहुत महंगी चीज है या कोई बहुत प्रीमियम चीज है या कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती हो, हम लोग बोलते हैं अच्छा तो है यार, पर पता नहीं जाएंगे नहीं उस रेस्टोरेंट में, यार ये बढ़िया तो है। अब आप लोग हो, सो ये लिपस्टिक अच्छी तो है यार, पर खरीदूंगी नहीं मैं, इससे अच्छा वाली खरीद लेती हूँ। सो व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग फॉर दैट? तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक फीडबैक और एक उसका यूजेज। आपने जितने लोगों को सोचा था, आपने जितने अमाउंट ऑफ कस्टमर्स बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स बोलते हैं, जितने अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स सोचा था टारगेट करेंगे, क्या उस ट्रैक पे ये है और क्या वो फीडबैक आ रहा है? इट्स नॉट अबाउट रेवेन्यू, रेवेन्यू पार्ट सॉर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स आप अब आप बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी का तो हमेशा ध्यान रखें, स्टार्टअप में भाई प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर कुछ चल ही नहीं रहा है, इट्स द की टू एवरीथिंग। तो यूनिट मैट्रिक्स तो आपके हमेशा सही होनी चाहिए, पर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, provided कि it's reaching to the right amount of audience and it's getting the right feedback and they are coming again and again to purchase it. For example, क्या होता है कि शहर में बहुत अच्छा जिम खुला, अब ये एग्जांपल एकदम सही है, तो बहुत अच्छा जिम है, आप बोलते हो कि हाँ यार ये पर्टिकुलर सिल्वर जिम बहुत अच्छा है, इसकी मेंबरशिप ले लो यार, बॉडी बन जाती है। एक बार आप मेंबरशिप ले लेते हो, फिर जाते नहीं हो, फिर जीवन में दूसरी बार लेते भी नहीं हो, आपको पता है। सो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट शायद जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे थे उसके लिए, मान लो आप कोई बहुत बड़ा सिल्वर जिम है, आप उसको खोल दो स्लम्स एरिया में, नहीं जाएगा ना स्लम्स का बंदा, वो कहेगा हाँ यार बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, फीडबैक भी अच्छा है। अगर किसी ने किसी तरह से ज्वाइन भी कर लिया एक बंदे ने स्लम के, फीडबैक भी अच्छा है, पर वो आ भी नहीं पाएगा, उसको भाई नौकरी पे जाना है, सुबह कूड़ा धोने जाना है, वो कह रहा है यार वापस जा भी नहीं सकता मैं रोज रोज यहाँ, पर बहुत बढ़िया है। तो आपको सही ऑडियंस के ऊपर सही प्रोडक्ट पिच करना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ यूजेज आ रहा हो, राइट अमाउंट ऑफ फीडबैक आ रहा हो, तो आप उसके साथ आगे जाओ। नहीं आ रहा है, सो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव अ फॉल बैक एंड स्विच इट। एंड कई बार बोलते हैं कि छोड़ो नहीं, उस चीज को पकड़े रहो और चलते रहो, नो दिस नॉट ट्रू, यू हैव टू लेट गो थिंग्स। बट आपका बेसिक प्रिंसिपल जो है, फॉर एग्जाम्पल अब कोई जिम खोल रहा है, मैं उसी एग्जाम्पल पे अटक गया, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल था कि वो लोगों की बॉडी बनवानी है, हेल्थ बनवानी है, तो कुछ और कराया, योगा सेशन कराना है, स्टार्ट कर दे, थोड़ा प्राइस कम कर दे, वट एवर इट इज। सो बेसिक आइडिया आप वही रखो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रोडक्ट थोड़ा सा फेल हुआ, उसका ऑल्टरनेटिव हमने निकाला अपने डाउट इंजन के अंदर, उसकी लेयरिंग 6 लेयर कर दी, 4 लेयर था उसको 6 लेयर बनाया, वहां पे इंप्रूवमेंट की, वहां पे ऑटोमेशन लगाया, अभी ऑन स्क्रीन डाउट लेके आ गए, तो उस वहां से बहुत सी लर्निंग मिली, पर उसको एक डिफरेंट पाथ पे हम लोग ने स्विच कर दिया।
Thank you, Alakh. I think that was very meaningful. A question to both of you on brand building. जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं कि पहले आप अपना वायबल प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करो, उसके बाद ब्रांड बिल्ड करना. कई लोग बोलते हैं पहले से ही ब्रांड बिल्ड करो, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों को फंडिंग भी मिल जाती है. तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि आपका व्यू क्या है इसमें ऑन ब्रांड बिल्डिंग, और ऐसी 2 मिस्टेक्स क्या है जो एंटरप्रेन्योर्स को अवॉइड करनी चाहिए अर्ली स्टेजेस में ऑन ब्रांड बिल्डिंग स्पेसिफिकली. श्रद्धा, आप आंसर करें. आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा. Yeah, what are the mistakes, Shradha, that one can avoid in the early stages when it comes to brand investment? And do you believe that people should invest early on, or should they first, establish their product? There are 2 schools of thought. So which one would you think is, viable, especially for the edtech sector? Now that you've added for especially for the edtech sector, I would say एक गाना था ना, ये पब्लिक है सब जानती है. Right now there is such high level of awareness, I can't even tell you that there is such level of scrutiny, and I think unfair, because for me there is a PhysicsWallah which is very different, but there is a lot of scrutiny, unfortunately. In fact, I don't want to say, I was in a very big important meeting with a lot of government officials, and there was the way they joked about one of the edtech brands, which is one of the most iconic edtech brands in the country, with lot of star power and everything. But I think for all of us to see, the answer lies here, which I believe that you can't buy a brand. You can't buy through money. Money can't build a brand. And I think today edtech world has established that for us as a case study, as clarity, कि आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को लाकर भी ब्रांड नहीं बना सकते if you don't deliver on promise. Especially edtech to me feels, and now that you Avani asked about edtech in particular, feels to me as there is so much of emotion attached to it. There is so much of aspiration attached to it. There's so much of hope attached to it. We just have to go back and look at our own families and upbringing. Parents give, I was interviewing this Honorable Minister Rajiv Chandrasekhar, and he had tears in his eyes because he was saying that for his studies, his father's lifelong saving or whatever was 8 lakh rupees. Wo sara apna paisa. And that's for the minister, that's for anyone, all of us will relate to that. So there is so much of emotion attached to edtech sector that if people feel that you are trying to fleece them or make money out of them, because there is this other school of thought where Nandan Nilekani has created, he believes that edtech should not be monetized, edtech should be in a certain way. So sab tarah ke thoughts hain. Us hisab se I would say to entrepreneurs is that we've seen, nobody should feel bad that I don't have so much of capital to build a brand, because a brand in edtech or any sector for that matter is built by consistent performance. And I know it sounds very, very boring, because if you say to someone that, brushing your teeth is the best thing, nobody wants to do it. Or before pandemic, if you told people buying health insurance is important, none of us do it. So as basic and as boring is performing and getting up and doing the same thing, and people should not feel कि आप उनका काट रहे हैं या आप उनसे पैसे बना रहे हैं. We are a very middle class country, all said and done. We don't want that. I studied in Stephens and my education was slightly more than all the other Delhi University college. And I remember my father asking कि ये क्यों, तुम्हारा ही क्यों है, क्योंकि बाकी कॉलेज में तो 200 रुपए हैं, तुम्हारे में 1000 रुपए क्यों है. So that is where I would say, and to me, brand building, I'm very clear, doesn't happen by money, by having film stars. Wo era chala gaya. You need creators. Alakh to me is a brand. He built the brand. He was the brand, and on which the business got built. Today, to some extent, I would say for my business also, right? Like there is authenticity attached to Shradha. And then people know कि अच्छा भी अब expand कर रहे हैं, 200 लोग का team है, तो शायद ये सारे लोग उस तरह से code of conduct behave करेंगे, शायद हम entrepreneur first रहेंगे. And that to me is how the brands are built. And of course, Avani, you should also talk about it, because you work in and you're part of a brand which is very, very consistent in the way they conduct themselves.
I think that's a great segue that Alakh, you are, like she said, PhysicsWallah, you built that niche and your authenticity comes from who you are. So any thoughts on mistakes? Because, looking at people who've built it, I think a lot of people who are starting their journey, unke liye choice karna difficult hota hai. So any mistakes in brand building early on that you avoided or that you think other people should avoid, Alakh? नहीं, श्रद्धा जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली। श्रद्धा मैम बोलता हूँ मैं जनरली। श्रद्धा मैम ने बहुत सही लाइन एक बोली कि पैसे से नहीं बनने वाला ब्रांड। और इसके बारे में एकदम यही एक लाइन संदीप जी करके हैं, संदीप सिंगल वीसी हैं, तो वो भी एक लाइन बड़ी सही बोले थे एक दिन की बात हो रही थी स्टार्टअप पे, फंडिंग पे, तो बड़ा क्लियर उन्होंने थॉट दिया कि मनी डजंट सॉल्व प्रॉब्लम, इट ओनली हाइड्स प्रॉब्लम। सो फॉर द टाइम बीइंग वो प्रॉब्लम छुप तो जाती है पर वो खत्म नहीं होती। मतलब आप पैसे से एक बड़ा स्टार लेके आ जाओगे, आपके ब्रांड के बारे में अच्छा बोल देगा, पर यार जो उस ब्रांड ने तेल बनाया है उससे बाल झड़ रहे हैं लोगों के, इट्स नॉट वर्किंग। सो अल्टीमेटली वो कहानी सॉल्व नहीं हुई है। तो इट्स बेटर कि आप जाओ और सर्च करो कि यार तेल के अंदर क्या पिगमेंट रह गया था, उसको सही कर लेते हैं, इंस्टेड कि आप किसी स्टार के ऊपर 5 करोड़ रुपए जला रहे हो। सो पुटिंग लॉट ऑफ मनी इनिशियली फॉर मार्केटिंग, फॉर बिल्डिंग ब्रांड विल नॉट वर्क। तो ये चीज मैंने अवॉइड की स्टार्टिंग से, अच्छी वर्क की। एक दो बार गलतियां भी की हम लोग ने, गलतियां करते ही हैं क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से लोग आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देम एज वेल। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मेरे अराउंड जितने भी लीडर्स होंगे सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग को हायर किया। तो कई बार वो अच्छे खुरापाती आइडिया लेके आते हैं और एक दो बार मैं फंस गया ऐसे आइडिया में। तो अब वो एकदम विजन से अलग आइडिया था कि ब्रांड बिल्डिंग में पैसा बर्न करते हैं, एंड वी बर्न लाइक व्हाट 4 CR ऑन ब्रांड बिल्डिंग। ये इसी साल हुआ था एंड दैट वाज अ ग्रॉस मिस्टेक। 4 CR वैसे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर फॉर पीडब्ल्यू इट्स अ वेरी बिग थिंग कि हम लोग कभी ब्रांड बिल्डिंग पैसा नहीं खर्च करते थे और कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और हम लोग को पता चला था कि इस दिन सर्वर लेके तैयार रहना, आपके डाउनलोड ऐसे आने वाले, ये हो जाएगा, आंधी आएगी, कुछ नहीं हुआ। सो इट फेल फ्लैट। सो स्टिक टू योर आइडियोलॉजी। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि देखो जहां तक पहुंचे हो अपनी मेहनत से ही पहुंचे हो, चाहे गधा दिमाग हो चाहे घोड़ा दिमाग हो, तो आगे भी यही गधा या घोड़ा जो भी दिमाग है इसी से चलना, ज्यादा राय मत लेना लोगों की। तो कई बार ना इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़ के आते हैं, जो बाहर से कोर्स करके आते हैं, मैकेंजी में जॉब करके आते हैं, वो जिंग जैंग आइडिया देते हैं आपको कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, और मैनिपुलेटेड डेटाज आपको बताते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। कई बार बाहर से भी लोग ऐसे इनपुट्स देते हैं टू वेस्ट योर मनी। सो डोंट फॉल फॉर दैट। अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे रुको, क्योंकि नो वन नोज योर ऑडियंस बेटर देन यू। सो स्टे ट्रू टू योर थिंग्स। कई बार ऐसा हुआ है मैंने अपने लीडर्स को डिसीजन लेने दिया है, जो कि अच्छे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर कई बार ऐसा हुआ है मैंने अपने इंस्टिंक्ट के अगेन उनको डिसीजन लेने दिया। ये बीच में चला करीब 6-7 महीने, एंड इन 90% ऑफ द केसेस आई डोंट नो इफ दे वर रॉन्ग और राइट, रिजल्ट्स नहीं थे। तो प्रतीक भाई अब मेरे से यही बोलते हैं, सर इसमें आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है, आप बताओ गट फीलिंग, यू नो द ऑडियंस बेटर, आपका गट फीलिंग ये कह रहा है तो अपन ये करते हैं। अब इसमें ज्यादा लोग की राय नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि टेकिंग टू मेनी ओपिनियंस इज ऑल्सो हार्मफुल। Correct. इट्स रियली हार्मफुल। सो गो विथ योर गट फीलिंग, गो विथ। मैं एक चीज और बोलूंगा कि बोला जाता है कि डेटा के डिसीजन लिया जाता है और बहुत सारा डेटा देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इमोशंस एंड गट्स। रूम के अंदर बैठ के इमोशंस और गट्स पे इंसान डिसीजन लेता है, फिर पूरी कड़ी मेहनत करता है उसको सही प्रूफ करने के लिए और लग जाता है जी जान से। तो ये एक हम लोग चीज करते हैं। बाकी श्रद्धा जी की एकदम एग्री करता हूँ मैं, मनी कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड। श्रद्धा जी की आप ब्रांड देखो ना, इट्स सो रॉ, सो नेचुरल। एंड श्रद्धा जी, इट्स नॉट अबाउट यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तो बनते रहते हैं भारत में, योर स्टोरी एक ही है इतनी स्टोरीज कवर करने वाला। सो दैट और आप जैसे यूनिकॉर्न ही हो गया फॉर एग्जांपल, इट्स जस्ट अ टर्म, डोंट फॉल फॉर दिस टर्म यूनिकॉर्न, वैल्यूएशन एंड ऑल दोस थिंग्स। बेसिक चीज क्लियर है कि नहीं, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है कि नहीं, आपका कस्टमर रिटेन्ड है कि नहीं, कस्टमर फीडबैक अच्छा है कि नहीं, ब्रांड के बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, ब्रांड का सर्च बढ़ रहा है कि नहीं। ये बेसिक चीजों पे आप वर्क करो, बाकी चीजें तो यार आती जाती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। सो दैट्स ऑल आई बिलीव। Like, I think it's true for all of us as we have to stop celebrating unicorn. मैं सोचती हूँ कि impact con, love con, baby con, pop con. There should be many more words than just unicorn in a country. And मैं कहती हूँ मैं love con हूँ. I think it went very popular, it went viral. कि the impact con के भी word होने चाहिए. And I think people are talking. मैं तो हर corridor में कह रही हूँ कि there has to be more word. Unicorn भी हमें US से मिला. Gave terminology, so there has to be more. But you know, Avani, if I can say something on what Alakh was saying, मेरे पास एक बहुत practical अभी मेरे life में गुजरा example है. We are doing an event in Bombay Tech Parks. हम बैंगलोर में 14 साल से कर रहे हैं.
पहली बार हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओनली कॉल्ड अस टू डू द इवेंट, और टीम्स है 20 यूनिकॉर्न का एक association है बॉम्बे में, so they said, oh, we want to do it in Bombay. So in 2 months we have to do something for which we work through the year. बैंगलोर में अलग भी आया है, काफी वायरल होता है ये हर समय जब बात करता है, and it's so, but for us it's tough. मैं सोची बॉम्बे में कर रहे हैं, we need to get film stars, right? And I was getting, and the more you talk to film stars, the more money everyone is asking, and I'm thinking, I don't have money. How do I get film stars? Because it's Bollywood, it's Bombay and everything. I can get, of course we're getting the deputy, you know, a lot of people and entrepreneurs are coming. You know, someone reminded me that, Shradha, are you being authentic? Like, and that was a very good question. Said, just because you're going to Bombay, you want Bollywood. Now you will go to Delhi and you'll want something else. Who are you? What do you stand for? Who are this audience? जो 1000 लोग आ रहे हैं, वो entrepreneurs हैं. वो क्या चाहेंगे? वो entrepreneurs चाहेंगे. मतलब, so why are you getting this and demotivated? मुझे लगा, getting back to focus, we all, after so many years, sometimes we do get distracted. We do get carried away. ऐसा होता है. And I did get carried. मुझे लगा शाहरुख खान कैसे आ जाए, पठान मूवी सक्सेस हुआ. I talked to Ajay Bijli, how can you get me शाहरुख खान, आमिर खान, or Sachin Tendulkar. I asked Harjan of Dream 11. So, you know, but now as soon as I stopped focusing on this and saying that entrepreneurs have the best lineup of the entrepreneurs from across the country, and most importantly, I have film stars. So the film stars reached out and they said, क्योंकि मैंने फोकस किया एंटरप्रेन्योर्स मेरे कोर पे, तो फिल्म स्टार्स आए और बोले हम भी इन्वेस्टर हैं, हमें भी इसका पार्ट होना है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि फोकस होना और नॉट कैरीड अवे होना is very, very important for the brand. Yeah. That's a very wonderful story you shared, and I think very practical. One other question is, you know, in education, right, or in media, I think in education, I think Shradha mentioned, right, that हमारी middle class mentality है, right? Parents अपने पूरे savings लगा देते. It's an emotional decision. So when a new brand is getting built, right, what is most relevant is आपका track record भी नहीं होता है, आपके पास outcomes नहीं होते हैं, right? तो वो बहुत challenging होता है. फिर आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप trust कैसे build करोगे अलग? I think one or two things that entrepreneurs would benefit from your experiences कि education में मेरी ये placement हो गई, मेरे students, right? The student in some sense is a product, और वो outcome आने में 2-3 साल लगते हैं unless it is test prep or something. So initially आप trust कैसे build करोगे अगर आपका track record नहीं है और पैसे भी नहीं है? Anything that stands out for you, or any practical suggestion for these guys who are working through their startups? You know, before Alakh answers, I'll answer for Alakh a bit on us as an outsider, because I've gone to his office, spent time and spent few hours. I've interacted a lot with him and his team. You know, what surprises me, Avani, is, and I have, because I've had the vantage point of interacting and spending time with a lot of edtech founders and over the years. So what got me, मुझे जो लगा, 2 चीजें जो मैं बोलूंगी, is कि इसके ऑफिस में ना मुझे बहुत मेरे जैसे बिहारी यूपी very down market, if I may say so, from a startup terminology, लोग दिखे. मुझे लगा अरे आ गई मैं बिहार में या यूपी में, या पता नहीं कहाँ आ गई. और मैं सोचा ये स्टार्टअप वाले हैं, मतलब because you know the definition of funded startups is, with all great respect, cool, very urbane, very you know, coming typical Silicon Valley with lot of amazing food and infrastructure. मुझे लगा ये कहाँ गए सब्जी मंडी में. So and it felt very familiar. So to me that familiarity is very important. That's something he can answer. वो जो familiarity है, जो अपनापन है कि ये मेरा काट नहीं रहा है, ये हमारे जैसे हैं. And I think a lot of that comes from him himself, though he will disagree and say it's PhysicsWallah, it's the brand, which he has manifested that ethos. वो of course he should answer. वो मुझे लगता है is a very big thing for PhysicsWallah to be standing you know, very distinctly from all the edtech players. क्योंकि वो आसान नहीं है, because as a founder you can bullshit and get away with it, but it's the story, जो हर चीज आपके ऑफिस में, आपके टीम में, आपके लोगों में वो दिखना, then that means there is something. And I think, as I said, public है, जानती है, and I think somewhere not, he has not bullshitted his way
to where he is. He has struggled his way, and that people can see in some way. And that has helped PhysicsWallah, I feel, to become a brand it is. Yeah, Alakh? या थैंक यू श्रद्धा. अच्छा हुआ आपने थर्ड पर्सन व्यू ले लिया ना, तो ज्यादा बेटर है. वो ज्यादा समझ में भी आता है, कि मेरे लिए खुद डिफिकल्ट हो रहा था समझना मैं कैसे बताऊं बच्चे क्यों आ रहे हैं. श्रद्धा ने बाहर से देख के ज्यादा अच्छा, शायद मेरे ख्याल से श्रद्धा जी ने रिलेट कर लिया. ये वही बात हो गई ना कि नौकरी करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए नौकरी चाहिए. तो ये उसी लूप में फंसने वाला है कि बच्चों को प्रूफ करने के लिए रिजल्ट दिखाओ और रिजल्ट के लिए फिर बच्चे चाहिए. अच्छा, पहली बात तो रिजल्ट पे बहुत फ्रैंकली बात करते हैं. अगर एडटेक फाउंडर्स हैं यहाँ पे अपकमिंग, तो यार अभी तो रिजल्ट्स बहुत फैब्रिकेटेड हो गए हैं. इतने फैब्रिकेटेड हो गए हैं कि इट्स ऑफ नो यूज. मतलब कहा जाता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 जहां से आएगी उस इंस्टीट्यूट में नेक्स्ट एडमिशन डबल हो जाते हैं. ऑल इंडिया रैंक 10 कहाँ से आएगी? ये ऑल इंडिया रैंक 1 तो घर पे पढ़ने वाला बच्चा होता है जिसको मल्टीपल इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं. आप देखो ना, 7-7 इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया रैंक 1 की फोटो आती है. ऑल इंडिया रैंक 10 5-5 इंस्टीट्यूट से फोटो छपवाता है. हमारे में भी छप रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं छपा हो. क्या पता किसी ऑनलाइन बैच के अंदर इनरोल हो तो जरूर छापेंगे, हम भी छापेंगे. तो ये रैंक वाला जो मसला है, ये बहुत ज्यादा मुझे एक्साइट नहीं करता. मुझे एक्साइट करता है वॉट एवर लेवल्स अ स्टूडेंट एंटर्स इनटू योर कोर्स, आप वहां से उसका बेटरमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए, उसका बेसिक आईक्यू लेवल बढ़ा कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और उसको खुद के अंदर चेंज महसूस हुआ कि नहीं हुआ. सी वी टीच लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ किड्स, और कुछ भी कर लो, भारत में सीट्स तो उतनी कम है, सब सेलेक्ट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, जितने स्टूडेंट हम लोग मेडिकल के पढ़ाते हैं, अगर उसके अंदर ही भारत का नीट का एग्जाम करा ले तो भी सिर्फ 10% बच्चा ही सेलेक्ट होगा. हमारे सारे बच्चों को ले ले तो हमारे ही सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले नहीं है. पहली बात तो यही होगी. So it's not about rank, it's neither about selection, it's about improving the quality of education, improving their IQ level, कि वो जिस लेवल बच्चा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ बच्चा, जैसे अब मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली किसी मॉल में जाता हूँ तो मुझे कम लोग पहचानते हैं, और इलाहाबाद की सड़क पे उतर जाओ तो लोग ज्यादा पहचानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दिन ताज होटल के अंदर रुक गया तो मुझे कम लोग पहचानेंगे. मैं किसी ओयो रूम के अंदर घुसता हूँ तो मुझे सब पहचानने लगते हैं. सो वी कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. टियर 3 टियर 2 वाले पेरेंट्स, वो बच्चे, वो हम लोग को जानते हैं. अब ये वो बच्चे होते हैं कि फॉरगेट अबाउट ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि उनका पूरा बेसिक खराब है ना. 6, 7, 8 कुछ पढ़ाई नहीं उन्होंने. उनका तो एकदम, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या ठीक है टियर 3 स्कूल में पढ़ रहे हैं. वो AIR 10 AIR 100 वाला बच्चा जो होता है, वो अलग गेम खेल रहा होता है. वो मतलब बहुत ही ट्यूशंस भी जा रहा है, हर सब्जेक्ट के अलग ट्यूशंस होते हैं, पेरेंट्स बहुत डेडिकेटेड होते हैं. और ऐसे केसेस जब भी आप देखो, जो रैंकर्स बच्चे होते हैं, टॉप रैंकर्स, एकदम टॉप रैंकर्स की बात करो, इन बच्चे के पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और बहुत बुली भी होते हैं बच्चों के ऊपर पढ़ाने को लेके. एंड वो होना पड़ता है, ठीक है, दैट्स देयर पेन, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सहारनपुर जैसे जगह से, या कश्मीर जैसी जगह से, या कानपुर के पास कन्नौज जैसी जगह, ऐसी जगहों से जब रिजल्ट आ जाता है, उरई से, वहां से मान लो एक ऐसा बच्चा जो मास्क बेच रहा था कोविड के अंदर, उसकी IIT में 4000 रैंक आती है, तो हमारे लिए वो होता है ऑल इंडिया रैंक 1. हम कहते हैं ये हमने करके दिखाया. वो हमें इंस्पायर करता है, वो हमारी सारी कंपनी को इंस्पायर करता है. उसके वीडियोस चला लेते हैं, फिर सबके अप्रेजल हम लोग कह देते हैं नहीं मिलेंगे, सब कहते हैं हाँ कोई बात नहीं चलेगा. सो दैट वर्क्स फॉर अस एज वेल. ऐसी 10 स्टोरी हमारे ऑफिस में चलती है. सब कि अभी रिसेंटली विश्वास दिवस करके हम लोग का एनुअल इवेंट होता है, उसके अंदर हमारी टीम ने, हमारे एक बड़े पुराने एजुकेटर, उन्होंने 2 बच्चों को बुलाया था, वो मेरे को भी नहीं बताया था, तो उनकी स्टोरी स्क्रीन पे चलाई. तो उसमें एक बच्ची थी, उसके पापा तो बस ड्राइवर है, और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है इस टाइम में, डॉक्टर बन रही है वो लड़की. अपने पहले पूरे, मतलब पापा बस ड्राइवर है, 4 बच्चे, दिन का 300 रुपए कमाते हैं. उसने मुझे राखी बांध दी अभी रिसेंटली. वो आई, उसने, उसका एक भाई था, उसने मजाक उड़ा दिया था. उसका एक भाई था, कजन था, जो बड़े रिच फैमिली से थे, तो उन्होंने कहा था तू कैसे डॉक्टर बन पाएगी, तो उसको बड़ा हर्ट हुआ था कि मेरा कोई भाई नहीं है. फिर उसने मेरी वीडियो देखी, वो सेलेक्ट हुई, फिर अभी आके राखी बांधी उसने दिल्ली में मुझको. और एक बच्चा ऐसी कानपुर का है, उसके फादर थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं, तो वो भी IIT कानपुर में सेलेक्ट हुआ. तो ऐसे रिजल्ट जब निकलते हैं ना, दिस इज चेंज, दिस इज रेवोल्यूशन, हम लोग को फील होता है. और वो वीडियो वहां चला, PW की पूरी जनता बैठी थी, सबकी आंख में एकदम आंसू भर के, सबके हाँ यार हम लोग कुछ कर रहे हैं. फिर हम लोग ने नेक्स्ट डे सबको मेल किया, अब अप्रेजल नहीं मिलेगा, खुश हो सब बोले हाँ. So that matters for us more rather than getting the top results, getting the top ranks, और उस होर्ड में पढ़ना कि सबसे बड़ी होर्डिंग हम लगाएंगे AIR 1 AIR 100 की, और ऐसा करेंगे. क्योंकि बेसिकली आप देखो, ठीक है, आप 100 बच्चा पढ़ाओगे, रिजल्ट तो लास्ट में 10 का ही आएगा जो टॉप रिजल्ट में जाएगा. पर बच्चा वो 90 बच्चा भी ये बोले कि यार जान लगाई थी टीचरों ने, जान लगाई थी टीम ने पूरी, हमने भी बहुत जान लगाई, और उस सफर में बहुत मजा आया, उस जर्नी में बहुत मजा आया. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कॉम्पिटिशन में जाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ, आई एम वेरी 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 डिस्ग्रेसफुल, वेरी बैड डांसर. मैं किसी डांस कॉम्पिटिशन में जाऊँ, मुझे पता है मैं नहीं जीत सकता,
है मैं कुछ भी करूं, पर वहां से अगर वापस लौटने के बाद मेरे को कुछ स्टेप्स आ जाएं, कुछ गाने आ जाएं, मैं लाइफ में आगे थोड़ा बहुत किसी भी फंक्शन में डांस कर सकूं, तो आई फील कि हाँ यार कुछ सीख लिया मैंने, मेरे कुछ आ गया, मैं जहां था उस कूड़े से काफी ऊपर आ गया। तो वो फीलिंग बच्चे को देना, उसको एक होप देना, उसको एक नई लाइफ दिखाना। मतलब हमारे बच्चे तो ऐसे टीयर 3 जगह से आते हैं जो ये दुनिया देखते हैं, क्लासेस में हमारी हम लोग की बातें ही सुन लेते हैं, लाइफ के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जॉब के बारे में, वो बातें उनको देना, वो ज्ञान उनको देना, उनको वो एक्सपोजर देना, वही इनफ होता है कंपेयर टू दी रैंक्स एंड ऑल दैट। तो अभी तो उस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। विद टाइम ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी आएंगे, बट ऑफ कोर्स आई विल से इट ओपनली एज अ फाउंडर ऑफ एडटेक आल्सो, आई विल से दैट रिजल्ट्स आर टू मच फैब्रिकेटेड दीस डेज। मतलब ट्रस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हमारा अभी बच्चा था 100 परसेंटाइल आए जेई में, और वो खुद बैच में इनरोल्ड थे, उन्होंने खुद हमारे बैच में इनरोलमेंट भी था, उनका नंबर भी चेक किया हम लोग ने, इनरोल्ड थे सिंस लास्ट ईयर, 1 साल पूरा पढ़े थे। और उन्होंने मतलब काफी बच्चे थे, 2 बच्चे ऐसे थे, सबने रिपोर्ट भी किया था कि हमारे 100% आए हैं, उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जो बाद में फिर बोले कि नहीं हम अपना रिजल्ट नहीं सबमिट करना चाहते। तो हमारी टीम ने कहा आपका डेटा हमारे पास है, तो बोले नहीं। फिर हमारी टीम के पास सबसे बड़ा एक ट्रम्प कार्ड होता है जो श्रद्धा को भी पता है कि आपकी अलग सर से बात करवा देंगे हम लोग, अब तो तैयार हो जाओ। और उन्होंने वो ट्रम्प कार्ड भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा अलग सर से मैं नहीं, पापा बात करेंगे। एंड व्हेन द फादर टॉक्स, देन द फादर टॉक्स अबाउट लिटरली मनी, फिर स्टार्ट होता है पूरा गेम। क्या चाहिए आपको, फोटो छापनी है तो इतना रुपया लगेगा, लाख रुपया लगेगा। अच्छा आपको फोटो के साथ ऑडियो भी चाहिए, 4 लाख रुपया लगेगा। अच्छा आपको रिजल्ट वाले दिन बच्चा अपने साथ चाहिए डांस करता हुआ, इसका 20 लाख लगेगा। अच्छा आपको एक्सक्लूसिविटी भी चाहिए, ये सारे टर्म्स आते हैं पेरेंट्स को आजकल, एक्सक्लूसिविटी चाहिए, कहीं और नहीं जाना है, तो भाई इतना पैसा लगेगा। और अभी तो इस बार तो जेई एग्जाम के पहले टॉप 10 रैंकर्स की पूरी लिस्ट, टॉप 10 या टॉप 100 ऐसी थी, मतलब कुछ पर्टिकुलर रैंकर्स की पूरी लिस्ट टहल रही थी, मेरे पास भी पीडीएफ आया था, और वर्सेस रेट लिखा हुआ था, इतने में ये, इतने में ये, इतने में, इतने में, क्लियर ओपन। और वो पीडीएफ टहल रहा है पूरे एडटेक में, किसको खरीदना हो खरीद लो। शाम को मैं देख रहा था किसने किसने लिया है, सेम रिजल्ट्स, वी डिडंट बाय इट, बच गए क्योंकि पीडीएफ काफी वायरल हो गया था। This is तो ये fantastic, कोई Alakh. चीज नहीं है, जो बच्चा आपके पास है उसको इंप्रूव कराना चाहिए। This is fantastic, Shradha, Alakh. I think Thank the you. session for me was really brilliant, knowing each of you and sensing the emotional connect. I think if I had to summarize the key takeaways, as Shradha said, if you look up the meaning of unicorn, जो बहुत एक mythical character है, जो एक दो में होना चाहिए, difficult to achieve. So I think the simple message that Alakh and Shradha are saying, be a true unicorn, struggle, make a sustainable business, built around trust, around the knowing your consumer, finding your niche. Don't worry about money to solve problems. Be true to who you are and don't get carried away. Be authentic. And most importantly, unicorn तभी बनेगा जब आपका धंधा और आपका 40-50 years का legacy होगा. I mean, I'm proud to say I'm serving on the board of NIIT, जो overnight flamboyant type की company नहीं है, जिन्होंने right principle से काम किया है. तो ऐसा unicorn बने जिसकी life stage आपसे आगे हो. So thank you very much. I think a brilliant session, spoken from the heart, and both of you are incredible brands personally and the companies that you stand for. So thank you so much for your time. Shradha, taking the time out, you've just recovered. Thanks again. And Alakh, a pleasure to meet you. And both your humility and your passion stands out. So all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you.